माता रानी की। जय माता दी। Okay. Okay, so we are live. All right, so welcome back to our very beautiful channel called STRI Unfiltered. And आज जैसे कि बहुत ही खूबसूरत दिन है, बहुत ही स्पेशल दिन है जिसे हम कहते हैं मदर्स डे. So a very happy Mother's Day to all you lovely mothers out there who are watching us and who are there on the screen. Hi everyone. हाय। So Hello. आज यहाँ स्त्री अनफिल्टर्ड में होने ये वाला है कि आज मैं बन गई हूँ होस्ट एंड आज मेरी गेस्ट महिमा खुद हैं एंड वी हैव रुचि विद अस, वी हैव श्वेता जी एंड वी हैव शीतल मैम. They all have joined from different cities today, and which is very great. So today we have gathered basically to talk about motherhood and celebrate the beautiful maternal bond which you all have with your kids and kids around us basically. So I'll start with Mahima कि देखो ये तो हमारी स्त्री अनफिल्टर्ड की को फाउंडर हैं ही और बहुत ही प्यारे दो ट्विन बच्चों की माँ भी हैं और एक वर्किंग वुमेन भी है. देन इफ यू टॉक अबाउट रुचि, सो शी इज अगेन मदर ऑफ टू एंड बहुत ही कमाल चीजें करती हैं, इंजीनियर है पेशे से एंड शी इज वेरी क्रिएटिव आल्सो व्हिच आई क्वाइट नो अबाउट हर. इफ वी कम टू शीतल मैम, सो शीतल मैम के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि शी हैज बिन माय मेंटर आल्सो. सो मैं इनको शीतल मैम की जगह कई दफे शीतल माँ भी बोल देती हूँ बिकॉज इनका लाइफ का फंडा ये है, बीइंग अ थिएटर डायरेक्टर, बीइंग अ वोकल कोच, लैंग्वेज कोच. इनके पास इतने सारे बच्चे हैं अराउंड इनके, सो जिनको ये सभी को अपना बच्चा मानती है. सो शी हैज लाइक सो मेनी किड्स अराउंड हर. And yes, so she's the mother of so many kids, and I'm one of them. And let's come to Shweta ji. So Shweta ji is again a teacher. She's living in Pune as of now, and she has her own company. Shweta ji, आपकी company के बारे में कुछ बताना चाहोगे आप? It's What is not it about? company, actually it is academy. It's a Academy. language Okay. academy, yeah. So I Oh, teach great. basically Hindi, Sanskrit and Marathi there. Lovely, lovely. So we have two language coaches with us today. Sheetal ma'am is again a language coach. She's into foreign languages, German and French and all. And we have Hindi and Sanskrit. That's great. So जैसे कि आज हम यहाँ पे सबके सब इकट्ठे हुए हैं, कुछ सवाल थे मेरे मन में क्योंकि भाई मैं अपने आसपास इतनी इतनी कमाल की मदर्स को देखती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको सलाम है, आप सबको हैट्स ऑफ है. सो मेरा सवाल, मेरे मन में बहुत सारे सवाल भी ऐसे उछल रहे थे. सो विच इज व्हाई वी थॉट ऑफ डूइंग दिस अमेजिंग लाइव टुडे. सो मैं सबसे पहले क्वेश्चन से अपने स्टार्ट करती हूँ कि आप लोग किस तरह मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं जब से भी आपको पता चला है कि भाई ये मदर्स डे नाम की भी एक चीज होती है. सो हाउ डू यू गाइस सेलिब्रेट मदर्स डे? आई स्टार्ट फ्रॉम श्वेता जी. एक दिन तो आता है, अभी मेरे बच्चों ने टियारा वगैरह पहनाया, मेरे फोटोज हाँ. लिए, दैट वाज डिफरेंट. बट बेसिकली आई सेलिब्रेट मदर्स डे एवरी डे. Wow. मैं मतलब कहीं से भी बाहर से आ रही हूँ तो जो मैं लेकर के जा रही हूँ, जो भी चीज है, इवन अगर खाने की भी चीज है, अगर मेरे बच्चों के चेहरे पे खुशी आती है, माय मदर्स डे, इट्स एवरी Wow. डे. Lovely. What about you, Sheetal ma'am? Well, I can only say one thing that I've been very lucky. I don't have to celebrate Mother's Day. It's my children who celebrate Mother's Day for me, and they celebrate me in small things. Like Shweta said, it's really small things. It could be just a message sometime early in the morning. I just received one fine message, a message, or maybe just a phone call. And like Vijayata said, I've got about 32 children. So I'm a momster, and I'm hard on them, I'm tough on them, but it's amazing. The feeling is great, and yeah, that's how I say that celebrate Mother's Day every moment. Mahima, what about you? So I think there are two phases to Mother's Day. Being from this generation, Mother's Day बहुत पहले से हमको पता है. So when I did not had kids, when I was have living with my mother, so I used to make sure कि मैं उनके लिए एक फूलों का बुके लेके आऊँ या एक greeting card बनाऊँ. The very usual stuff. Sometimes I've brought cakes as well to celebrate with her. But I think
the motherhood wali feeling tab आई when I myself became a mother, and my kids have grown to I think certain age 3 to 5 years when they started knowing what is Mother's Day. So Yeah. अभी ऐसा हो गया है कि until kids are very small, my husband used to give me a bouquet or something to make me feel special that I'm a mother. So cute. But yeah, but since my kids have grown up and they understand what is Mother's Day, more than me, they are excited because they are quite Mm-hmm. young, 10 years right now. So like they start planning the day 3 4 days ahead. कि मामा Mm-hmm. मदर्स डे आ रहा है तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू. सो फर्स्टली डिनर तो पक्का है. Then we want to spend the entire day with you with a clause that you are not going to do work. So Wow. thankfully Mother's Day always comes on Sunday, so that clause is always fulfilled. But sometimes I have to work on Sundays as well, and that is where the clause is कि आज आपका full day is only with us. You're not allowed to do any work, at least office related work. So full So day you have nice. to spend with us, and Great. you have to eat all the meals with us. ऐसा नहीं होगा कि आप अलग बैठ के खा रहे हो खाना. So it's Mm-hmm. small things. They want the entire day to be spent with them. So I Right. really feel special because they make me feel special. Most of Lovely. the time I'm not into that mode of full day celebration of Mother's Day, but it is because of the kids that they make it very special day for me. Lovely. Great. This is how you guys celebrate Mother's Day. Like being mothers, it's special for you guys as well and your mothers as well because मेरा ख्याल है माँ बनने के बाद एक और एक वो फीलिंग आ जाती होगी ना कि ओके मतलब अब हम भी माँ है सो यू कैन मेक इट मोर स्पेशल मे बी आई डोंट नो. Yeah, but I ओके think it's the ग्रेट. kids who always play this part when we become the mother. Correct. Okay, so let's move on to the next question, which is what are the three good things about being a mother? Sheetal ma'am. I think the first thing that is because I think being a mother is more of a learning than teaching. Mm-hmm. And for me, it's learning to love unconditionally. Because as much as you love your child, you may not love anything else as much as that. So I think one most important thing is learning to love unconditionally. You are all there. You are always out for your child, defending him or her, whether the child is right or not. It's just acceptance. So I think the three things that for me motherhood is all about is learning, acceptance, loving. These are the three things Wow, that I think are most beautiful about being a lovely, lovely. Shweta ji, what about you? uh, the learning, or you say ki like what I got, number one, I got the patience, which mother. was missing in me. Yes. I got patience, number one, and number two, I got everything in one package. Like whatever relation you say, मेरे पास दोस्त भी है, मेरे पास सब कुछ है, वो ये दोनों ही है मेरे. Like my son is now 23. सो Mm-hmm. 23 ईयर ओल्ड में मुझे एक बेस्ट फ्रेंड दिखाई देती है जिसके साथ मैं गॉसिप भी कर सकती हूँ. लाइक मैं उसके साथ बाजू में बैठी हुई औरत की भी गॉसिप कर सकती हूँ. अपनी अपने स्कूल से आके सब बता सकती हूँ मैं मतलब मुझे ना वो जज करते हैं बल्कि वो मेरे लिए मतलब कि हाँ मम्मा ने जो किया वो बेस्ट है. सो आई गॉट एवरीथिंग. दैट वाज द फर्स्ट लाइक खुशी तो डेफिनेटली है, लेकिन उसके पीछे एक चीज ये होती है आपको लाइक स्टार्टिंग में जो स्ट्रगल होता है, वो स्टार्टिंग का स्ट्रगल मैं बोलूंगी उसको करना तो पड़ता है, सबको ही करना पड़ता है, बट Mm-hmm. उसको स्किप करने के कोई चांसेस नहीं है. उसको स्किप करने का कोई दवाई नहीं आती है, कुछ नहीं आती है. यू हैव टू गो थ्रू इट एंड योर चाइल्ड इज योर चाइल्ड. सिंपल एज True. दैट. शीतल मैम सेड कि राइट और रॉन्ग, या आई मतलब मुझे वो टीन Together. वाला जो नखरा है, आई नो दैट इज टीन वाला नखरा, बट मैंने Yeah. उसको टाइम दिया और उसको रिस्पेक्ट भी किया कि या इट इज आई हैव गॉन थ्रू, तो दे आल्सो शुड. Wow. Mahima. So I think biggest part is my kids are 10 years, so I can hug them and kiss them anytime. That is the best part I currently like about it. Yeah. So physical affection ke liye you always have your kids. They are always there to love you, to hug you, and they're very vocal at this age at least because जो Right. टीनेज वाला फेज है वो मेरे लिए अभी 1 2 साल और दूर है. बट द फेज दे आर इन राइट नाउ इज दे आर वेरी लविंग टू मी. फॉर देम Mm-hmm. आई एम द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. सो Mm-hmm. आप कैसे भी मोड में हो, समटाइम्स यू आर स्ट्रेस आउट ऑफ वर्क, आज का दिन अच्छा नहीं गया, बट if you still sit with them they will try to make you laugh. They'll
I mean, they are the stress busters for me is all I can say. So however bad mood I am in, या मेरा किसी से झगड़ा हुआ है ऑफिस में, कुछ भी हुआ है, I think once I see them, I love them, or they hug me, I think everything goes away. So that is the best part about having kids. Lovely. Yes. So Ruchi, there are many more things to what yeah. already Shruti ma'am has said or Shweta ma'am has said. Patience, and there are a lot of learnings. Uh, I think one more thing which has happened is I've become very, very emotional. I never used Mhm. to cry so often, but somehow something has changed since I've become a mother, and I've become a cry baby. I cry very easily after they are born. I don't know what has changed, but I have become very emotional after that. Ruchi, as you're back with us, so my question was, what are the three good things about being a mother? Actually, being a mother itself is a very good thing, I think. Passing or sharing our culture to with the next generation is a good thing after being a mother. हम Mm-hmm. अपनी जनरेशन का सब कुछ दूसरे जनरेशन को दे रहे हैं, उन्हें अपना कल्चर सिखा रहे हैं। एंड आफ्टर बीइंग अ मदर मुझे जो एक बहुत अच्छी बात लगी, जैसे मेरी बेटी ने मुझे जीना सिखाया। ठीक है, Mm-hmm. वो मुझे बहुत मोटिवेट करती रहती है कि नहीं आपको बहुत फिट रहना है, यू हैव टू लुक स्मार्ट एंड ऑल दिस, सो दिस थिंग ऑल कीप मी मोटिवेटेड। Wow. Lovely. Great. So let's move on to the next question, which is there a thing called a perfect mother? What do you say? Ruchi, आपसे चालू करते हैं. या आई थिंक एवरी मदर इज परफेक्ट इन हर चाइल्ड्स आई। हर Mm-hmm. कोई बच्चा चाहता है, मतलब सोचता है कि उसकी मदर जो है वो परफेक्ट है, परफेक्ट माँ है उसके लिए। सो Mm-hmm. आई थिंक यस, परफेक्ट मदर एग्जिस्ट। सो क्या उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है अलग से, या यू मतलब वो एक नेचुरल ही एक इंस्टिंक्ट वो आ जाता नेचुरली है? ही आता है, वो नेचुरली ओके. ही आता है, क्योंकि हम तो अपनी तरफ से मेहनत कर ही होते हैं, बट चाइल्ड के लिए तो वो हर चीज परफेक्ट ही होती है जो उसकी माँ करती है। वाओ, दैट्स ग्रेट. श्वेता जी, व्हाट डू यू थिंक? Uh, I think perfect mother is like a fingerprint. You know, like fingerprint is different from all. Like perfect mom is also different from all. There is no perfect mother. I'll say it is just, you know, like a image which is perfect, and a Uh-huh. perfect mother is only for the child. Like, you know, perfect mother. Other will complain about you, and I don't think so that you can just you know, like just talk to the other mother, you can just discuss with your things, but you Right. can't accept whatever they are doing for their kids, or your nani dadi, or your maybe mill or sil, or whoever in this world doing Mhm. they for their kid. You feel that what you do is a different thing, that's like a fingerprint, I say. Correct. So, okay, we have one more guest with us who has joined. We have Priya. Hi, Priya. Hello. Welcome to Priya Hello. Unfiltered uh, live streaming today. Happy Women's Day to you. Hi, hi Vijeta. Hi Mahima. Thank you. So, And good to see Priya you के all, बारे में मैं moms. आपको बता दूं कि she is in Delhi as of now, and she's an IT professional and mom of two again, two cute Oh, boys. So, प्रिया जी, अभी इस वक्त हम बात इस बारे में कर रहे थे कि क्या ऐसी कोई चीज होती है जैसे जैसे कहा जाता है कि एक परफेक्ट मदर आप हैं या आपको बनना है, तो आपका क्या विचार है इसके बारे में? No, I would say there's nothing in this world is perfect. Some or the other thing is having some or the other flaws. Mhm. So, being a perfect mom, I would not go with this statement. Mhm. But yeah, from our side, as she said, from our sides, we try our level best to be bestest from our side, whatever we can do better for our kids, for ourselves, in fact, because it's a learning for us. Right. Our kids only make us mom. So, new to everything, so they only make us I situations think make there's us some learn. network issue. again, प्रिया there is a आप network issue. नहीं है. Yeah, so we'll get back to her. शीतल मैम, आप बताएं, what do you think? Is there a thing Um, called a perfect mother? I don't agree to this because there is no way to be a perfect mother. I think the only way is to be a good mother. Yeah. Because as a mother,
Nobody is perfect, and we make mistakes, we forget things, we lose control, we lose our cool. You know, some days we like children go crazy, but it's okay. It's okay at the end because, like I said earlier, it's just unconditional love, and if you can offer or you can just spread that unconditional love, the child will love you back unconditionally, accept Mhm. you, and at the end, I think everything will be okay. So I think more important than being a perfect mother is, I would say, I would rather be a good one. You know, where Wow. I can share the right values, the right way of falling and rising and teaching the child what to do next, how to deal. Because I think that's Right. what's more important. Yeah, Mm-hmm. that's what's important. All right. Mahima, what do you think about it? Even I believe what Sheetal ma'am said, that there's no perfection. I mean, nothing is perfect in this world. At least I feel there are so many things that I'm lacking. I see some wonderful moms around me. Yeah. Especially one thing I would like to share is being a working mom. I always have a guilt that I'm not able to spend too much time with my kids, or some of their time which should be theirs. I'm doing, Right. spending that time with my work, or I have to do a lot of business travel also, and that Mm. makes me more guilty that I'm away from the kids for a week or 2 weeks. And they sometimes tell me that you are working so much, that we just want you to be there with us, we don't want anything else in the world. Yeah. So, like everyone said, there's no perfection, and all of us are humans. When we Right. become a mother, it's the class starts for us. Kids actually teach us how to be a mom. Kids actually teach us what are their needs, and then we fulfill that. And I think, Right. moreover, what we see is, we are always an image of our own mothers. So I think I am Right. giving all the values that I have got from my mother. So मेरी Correct. माँ ने जो मुझे सिखाया है, जिस तरह से मुझे पाला है, बड़ा किया है, जो वैल्यूज मेरे अंदर है, my only hope is that I am able to inculcate all of those values into my kids as well. So that Right. someday they become a happy child, a happy and kind human being is all I can pray to God. Because Right. बाकी सब तो भगवान के हाथ में है, but I think, oh, that is what I feel, that I'm just replicating what my mother has taught me. Right. That's great. That's great. So basically, अगर मैं इसको सफाइस करूँ तो इस चीज का कोई आंसर दुनिया में ढूंढ नहीं सकता कि एक परफेक्ट मदर क्या होती है, बिकॉज आप सब अपने आप में परफेक्ट हैं, बिकॉज व्हेन यू लुक एट योर किड्स दे आर डूइंग ग्रेट। आपको पता है कि आप उन्हें सही राह दिखा रहे हो, सही दिशा दिखा रहे हो, सही परवरिश कर रहे हो। सो आई थिंक आप सब अपनी अपनी जगह परफेक्ट ही हो, नहीं? सो एक परफेक्ट मदर होना, वी कांट एक्चुअली पुट इट इन अ ब्रैकेट। व्हाट डू यू थिंक? I think one thing is, like, very first, Ruchi said is, we are perfect in the eyes of our kids, and that is enough for us. I mean, Right. as long as our kids think that we are the best mothers in the world, Right. that is more than enough. Whether we are doing I mean, everyone is doing their 100% in their own ways. Mm-hmm. Sheetal ma'am, you were Yeah, saying but something. also because you know, like they say, each child is unique. I think each mother is also unique because you Absolutely. don't know, each situation is unique and different. Different mothers have different challenges. Plus, they have different skills to offer and different abilities to share with their children. So if you just can't, like you said, there's no bracket, there's no slab. Okay, slab A, Right. perfect mother; slab B, almost perfect mother; slab C, not at all a perfect mother. No, there's nothing like that. A mother is a mother Yeah. at the end of the day. So yeah. Correct. I think Great. I'll just want to quote one recent example. There's a Yeah. movie which has recently come, Mrs. Chatterjee versus Norway. So Uh-huh. the very famous dialogue, that मैं एक माँ हूँ, मुझे नहीं पता मैं अच्छी माँ हूँ या मैं बुरी माँ हूँ, मैं बस एक माँ हूँ. So I think that is all sums up that हम सब mothers हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, nobody knows that, and nobody can judge that also. Who is a Correct. judge? Who can judge that actually? Actually, very true, very true. So let's move on to the next question, which is, कभी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आई अराउंड योर किड्स जहाँ पे आपको लगा कि यार नाउ दिस हैज बिकम डिफिकल्ट, लाइक व्हाट डिड यू
do to get through a difficult situation around your kids, if there was any? So, was there any difficult situation with you, ma'am, any time in the life? Like I said earlier, I've got almost 32 children around me. And I have been blessed actually. I've found daughters whom I always wanted. I've had beautiful, amazing, loving sons. And children have always been there for me. Situations I hear, yes, there have been a lot of situations where you have to walk away, where you Yeah, have to just, take a stand and say, no, this is right and this is not right. Maybe it's right for you, not right for the child. And the child may yeah, feel let down. But I think the only way to to fix the situation is to talk, to communicate, yeah, and to just support the child. I think that's right, what's most important because for a mother, it's more heartbreaking than for a child. When right, things go wrong, it's it's the child because the child just gets lost because for a child, the mother is the one. The mother is the pillar. The mother is the supporter. The mother is the one who's going to be there. right, And then suddenly, when something like this happens, whether it's extremely drastic or it's a small situation, it's the child looks up to the mother. So right, when that happens, I think it's the mother who has to just be there, be there and have the patience and just wait. You can't just force yourself down and be like, no, this is right or this is wrong. Just wait for the child to understand, and I'm sure your kid is going to come back. I mean, that's always happening. yeah. So it's That's just again, when the love your mother makes child choice, deeply. right? Yeah. Just Yeah, love the child deeply and just wait for the child because when the child will come back only if you understand him or her and if you are there for your child or your kid. absolutely. Priya, can you hear me? ओके, आई थिंक देयर इज अगेन सम नेटवर्क इशू। One श्वेता जी, second. आप बताएं कि कभी लाइफ में आपको किसी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा जहाँ पे अगेन वही होता है कि बीइंग अ मदर देन देयर इज दिस सिचुएशन वेयर यू हैव टू मे बी सेफगार्ड योर चिल्ड्रन, सो हाउ डिड यू गॉट थ्रू दैट सिचुएशन? लाइक जैसा मैंने बोला कि अभी दोनों बच्चे, एक 18 और एक 23 हो गया है। सो जिस दिन दोनों पैदा हुए थे, संघर्ष तो उसी दिन से शुरू हो ही जाता है, वो गोदी में आने से राइट, ही संघर्ष शुरू हो जाता है। बट मैंने जो चीज़ देखा है कि लाइक उसको खींच करके ख़त्म करने की जगह मैंने लाइक पेशेंटली उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए लाइक मे बी अगर कभी-कभी ऐसी सिचुएशन आती है, लाइक बच्चे हैं, कभी-कभी सिचुएशन आती है व्हेन लाइक या तो उनसे रिलेटेड है या उनके ही कारण है। तो लेकिन राइट, उस ऐसे समय पर भी लाइक उनके सामने बस्ट आउट होने की जगह या फिर उन्हें अपने हथियार डालना जिसको कहते हैं उसकी जगह आई जस्ट टुक सम टाइम, थोड़ी देर साइड में मे बी कभी-कभी अपने कमरे में आ करके लाइक यू जस्ट बस्ट आउट एंड देन यू जस्ट क्लीन एवरीथिंग एंड यू जस्ट गो आउट लाइक ठीक है चलो कर लेते हैं। सो इतना करते 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 जो अभी तक मैं बोलूँ कि जहाँ तक मैं आ गई हूँ, तो ये सुन के बहुत अच्छा लगता है कि जब भी दोनों कहीं पर भी स्टक होते हैं या फिर लाइक अपने दोस्तों के साथ में कुछ भी होता है जहाँ पर भी, मेरे बच्चे सबसे पहले होते हैं कोई बात नहीं, मेरी मम्मी को कॉल करते हैं, वो सब संभाल लेगी। लाइक सो ये जो वाओ, स्ट्रगल और जो भी चीज है वो जो जहाँ था वो सब लाइक करना है, सबको करना है, करके आते 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 सो राइट, यस देयर डिफिकल्ट टाइम्स। सब कुछ होता है उनके एज के हिसाब से भी, हर चीज लाइक कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। मेरे सपने बहुत बड़े थे अपने बच्चों को लेकर के, तो ऑब्वियसली मेरे संघर्ष भी बड़े थे उनको लेकर के, वाओ, लेकिन दोनों बच्चे साथ में रहे और मिल करके हमने नैया पार लगा ली। अभी हाथी बस हो गया। राइट। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जहाँ हम ये ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे एक तरफ बच्चे हैं, एक तरफ हम खुद भी हैं, तो कभी-कभार दिमाग में एक वो चीज़ भी आती होगी ना, कि माँ होने के अलावा मतलब मेरी अपनी भी तो कुछ एक हाँ, क्या बोलना चाहिए उसको, मेरा भी तो कुछ अस्तित्व है। अपनी अभी एक अलग यहाँ सी हाउ डू यू डिफरेंशिएट इन बिटवीन दैट थिन लाइन कि ओ शिट, एक साइड बच्चा है, एक साइड मैं खुद भी तो हूँ, माँ तो हूँ, ठीक है, बट मेरा अपना क्या? सो कभी ऐसा कोई थॉट आता है?
या उस टाइम पे भी आपको फर्म रहना पड़ता है डेफिनेटली, यू नो लाइक जब तक बच्चे छोटे होते हैं सो उनको हमारी थोड़ी ज्यादा जरूरत होती है, बट साइड राइट। बाय साइड हम अपना भी लाइक यू नो मेरा खुद का भी चलता रहा। लाइक यू नो मैं अगर अपना खुद का देखूं तो मैंने कभी खुद को एकदम कम्प्लीटली चेंज नहीं कर दिया। यू नो लाइक अगर मुझे टैटूज पसंद है, यस आई हैव टैटूज, आई लाइक सोलो ट्रैवलिंग, यस आई, मैंने उनको ऐसा नहीं कि लाइक किसी को यू नो लाइक नानी बुलाई या कुछ और किया या कहीं और से और उनको बस छोड़ दिया और मैं चली गई घूमने के लिए, ऐसा नहीं था। लाइक यू नो आई स्लोली स्लोली आई स्टार्टेड ट्रेनिंग देम, यू नो लाइक उनको ऐसी राइट। चीजें सिखाना कि लाइक यू नो ये देखो ये मुझे करना है, ये मेरा, जैसे मुझे मीटिंग में जाना है, लाइक महिमा सेड कि ट्रिप्स पे जाना होता है या फिर कई बार क्लासेस होती हैं सुबह से लेकर रात तक जब मेरे बोर्ड एग्जाम्स आते हैं, तो उस टाइम पे हाँ ये मम्मी का काम है और मम्मी जाके करके आ जाएंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। करेक्ट। सब कुछ करेक्ट। करना चाहिए अगर आप यू नो मेरा ये हमेशा से मानना है कि अगर हम खुद को छोड़ते हैं या हम खुद को बदलते हैं तो कितने टाइम तक यू नो लाइक इट्स लाइक अ बलून ओनली, वो फूलते राइट। फूलते 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 फट जाएगा। सो आई डोंट थिंक सो कि हमको खुद को चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। राइट। माइमा, व्हाट डू यू थिंक? नो दैट इज ट्रू। आई थिंक मेरा सबसे बड़ा स्ट्रगल लाइफ का ये रहा है कि आई हैव ट्विंस, सो या दे आर बोर्न विद कंपटीशन। सो मतलब एक ने खाना जल्दी खा लिया, एक ने खाना देर से खाया, वर्सेस क्लास में भी एक के एग्जाम में नंबर कम आ रहा है, एक के ज्यादा आ रहा है, तो द कंपटीशन स्टार्ट्स एट होम, इवन विथ वेरी स्मॉल थिंग्स। एक ने जंप मारी और दूसरे ने भी जंप मारी, तो किसने हाईएस्ट जंप मारी, एंड दे ऑलवेज compare each other with everything in life. So that is a constant struggle that I have to deal with. So for example, अगर किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया and I am praising one of like my younger kid, I am praising him for doing very good in physical activities. The other one gets annoyed. He feels कि he has not done well and that's why I am not praising him. मतलब मुझे प्रेज करना है तो भी बहुत संभल के करना है कि दूसरे वाले को बुरा ना लगे, बुरा and नहीं at लगे। the same time I have to continuously tell him कि you can do better, या I always tell them, because everyone cannot be perfect in every field. और because ट्रू। दो बच्चे हैं, दोनों की अपनी इंडिविजुअलिटी है, दोनों किसी राइट। अलग अलग फील्ड्स में अच्छे हैं, तो मुझे उनको हमेशा ये समझाना पड़ता है कि अगर जो लाइक माई यंगर किड, ही इज वेरी सुपर एक्टिव, ही इज गुड इन फिजिकल एक्टिविटीज, एंड एल्डर इज मोर ब्रेनी, ही इज गुड इन मैथमेटिक्स एंड यू नो things which are studies related. So I have to always do that comparison ki you cannot be the best in every field. If one is करेक्ट। doing good in one field, the other would be doing in some other field. So वो एक राइट। constant struggle है everyday life का मेरा कि neither I can praise any one of them too much या फिर किसी को बहुत ज़्यादा disappointed भी feel नहीं कराना है. So with twins there are different challenges which most of the other moms does not have to face. उनके खुद या के अलग challenges होते हैं. But आई थिंक जैसे श्वेता दी ने बोला कि इंडिविजुअलिटी नहीं खोना चाहिए. So I think I have been very very fortunate to have a best husband in the world, I must say. So he always makes sure that when we are on vacations, when I'm going to office, he's taking care of the kids completely. So I get my entire me time for the day. So we have divided, like Saturday if it is my day, Sunday it is his day. So वाओ। if it is Saturday my day, then I'm completely free on that day. मैं देर तक सो सकती हूँ, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर लंच या डिनर पे जा सकती हूँ. I can do whatever I want to do, and same goes for him. So in a way I never dearth for that time कि मुझे me time नहीं मिल रहा है. Plus राइट। I'm constantly traveling for my work, so me time मुझे automatically मिलता है. Like मिल जाता है। I'm राइट। off on a week out in Bangalore or some other city, then that entire week is mine. I'm away from kids, I'm away from home. So या I don't miss that. In fact, it's the other way around. मैं kids को ज़्यादा miss करती हूँ. Sometimes I feel I'm not getting enough time with them. Like पूरा राइट। हफ्ता भी हुआ मैं उनके साथ 2 घंटा भी spend नहीं किया, तो मेरे लिए वो दूसरा ही struggle है. राइट। सो बेसिकली आपके लिए वो स्ट्रगल है कि बैलेंस किस तरह बिठाना है, बिकॉज Yes. अगेन यू आर वर्किंग एंड यू हैव टू ट्रैवल अ लॉट एंड देन वो ट्विंस का आपस का बैलेंस। सो Yeah. ओके, मतलब सो मेरा जो अगला सवाल है वो इसी के अराउंड है कि आप सबके अपने अपने अलग अलग स्ट्रगल्स हैं टू डील विद द सिचुएशंस एंड विद द किड्स। सो पर्सनली मैं नहीं बोलूंगी अपने लिए, बट हाँ, देर आर सो मेनी मॉम्स टू बी आउट देयर और न्यू मॉम्स फॉर दैट मैटर
एनी मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव देम, लाइक आप लोग की खुद की लर्निंग से, मतलब आप लोग इतने सालों से माँ का ये जो एक बहुत ही खूबसूरत किरदार मैं बोलूँगी वो आप लोग निभा रहे हो और बहुत ही शिद्दत से निभा रहे हो, बिना बायस्ड हुए, बिना किसी कंडीशन के। सो उन न्यू मॉम्स के लिए या फिर जो आगे जो मॉम्स टू बी हैं, क्या उनके लिए आपकी कोई लर्निंग जो आप उनको देना चाहो या उनको एक सौगात देना चाहो, मे बी अ गिफ्ट ऑन मदर्स डे? शीतल मैम आप? Um, I would say that let's teach our children to be real. And for ओके। that, we as mothers, we really require a lot of patience, a lot of हम्म। tenderness, kindness, and we just have to, I think, because most of the times हम क्या करते हैं कि हम बच्चों को बच्चों की तरह treat करते हैं. So whether it's a 1 day old, 1 month old, 1 year old, 10-year-old, 20, 30, 40, 50, for a mother, fortunately or unfortunately, a child remains a child. So I think if राइट। we stop treating children as infants, babies, toddlers, teens, kids, adolescents, and mother to be, wife to be, we need to start treating them as human beings, just plainly human beings, because that's when they will treat us mothers also as human beings and not mothers, and that's when we can have that give and take of learning and teaching, of patience, of a lot of हम्म। tenderness, and most importantly, like I said, teaching them to be real. When you राइट। you are real with your children will turn out to be real with you, and they'll be honest with you. So I think करेक्ट। that's one of the most important teaching for a child. Just love. Love is the one best gift that a mother can give. Teach the child to love, and everything goes well. Because I think वाह। that's something that wins everybody and everything in the world. That's my belief. So that's वाह। something I would definitely, tell parents. हाँ। लवली। श्वेता जी, आप, आपकी कोई लर्निंग जो आप एज अ गिव अवे ऑन मदर्स डे न्यू मॉम्स को या मॉम्स टू बी को देना चाहें? फॉर्चुनेटली मेरे घर पर 2 न्यू मॉम्स हैं, ओह मेरे ही लवली। घर पर। Like, तो मैं उनको कुछ भी सिखाने की कोशिश नहीं करती हूँ। हम्म। मैं बस उनको ये कहती हूँ कि ये लाइक लाइक जैसे मैंने बोला था कि इट्स अ फिंगरप्रिंट, सेम थिंग उनको राइट। मैं बोलती हूँ, जो तुमको ठीक लगता है वो तुम करो। लाइक अगर घर में से कोई बड़ा आकर के अगर उनका अपोज करने की भी कोशिश करता है कि ये क्यों खिलाया या फिर ये क्यों हम्म। किया या यही खिलाना चाहिए, देखो हम तो ये खिलाते थे। सो आई एम ऑलवेज लाइक कि जैसे माँ जो होती है ना, वो अपने बच्चे के लिए 99.9 नहीं, 100%, किसी भी आप स्पीशीज की मदर ले लो, वो अपने बच्चे के लिए बेस्ट ही करती है। सो जो वो खिलाएगी, जो वो पिलाएगी या जो भी वो करेगी, इवन स्टडीज कर लो या कहीं भी घुमाना कर लो, अगर वो पटकना भी चाहती है ना, दैट वो बेस्ट करेगी। वो कोशिश करेगी कि दिस शुड बी द बेस्ट। तो लेट द मदर डिसाइड व्हाट इज द बेस्ट थिंग, लेट हर डू, वाह। बट ओनली थिंग बी पेशेंट, नथिंग एल्स, जस्ट टेक योर लवली। टाइम। लवली। माइमा आप बताएं? I think the biggest learning for me is don't be too much serious. I mean, Yeah. motherhood itself is a kind of job that, and you will learn slowly. So day one पे ऐसा नहीं कि mother बनने पे you have to do everything perfectly and you have to do everything all on your own. Delegate to your husband. Don't try to do everything on your own, specifically for the mothers. You're already very tired. You cannot do all. So राइट। don't get too much tired and don't cut off your social life. I think especially I've seen Indian mothers to be very very serious about their kids. They try to spend most of their time, their whole life revolves around the kid, which is good राइट। and which should be the case for new mothers. But specifically for new mothers, if you do continuously do the same thing where your life is only revolving around your kids और कुछ राइट। भी लाइफ में नहीं कर रहे हो, there would come a time when that bubble will burst and you will start feeling very tired. You will feel कि अब मैं क्या करूँ, मेरी लाइफ में कुछ बचा नहीं है. So I think only thing is don't take this as very seriously. गलतियां हो रही होने दो, कुछ ठीक है कुछ नहीं है इग्नोर करो, and have your social life, have your girlfriends, meeting your girlfriends, going out, having some chill time only for yourself.
new mom or having a baby does not mean that you are now not having your own individuality. Still Right. have your individuality, and enjoy your life. It does not mean you have a kid that means you cannot enjoy them. You still Wow. have your life. Absolutely. True, Absolutely. true. Great. So it was lovely talking to you all, and knowing so much about you, being a mother. I mean, आप सब महान हैं, आप सब कमाल हैं. So hats off to all of you. And I really wish कि हमारा आज का ये जो live streaming था, though it was on a very short notice, but people will watch it later and will definitely get to learn and think over motherhood again, all over again. Maybe you never know. So thank you so much Sheetal ma'am, thank you so much Shweta ji, thank you so much Mahima. आप हमारे live में आए, स्त्री अनफिल्टर्ड को आपने join किया, and I'm really very grateful and wish you all a very 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 happy Mother's Day. आपको शत शत नमन Thank you प्रणाम. so much for having us. Thank you Thank so you much so for having much. us. Thank you. Bye. All right. Bye bye. Goodbye. Enjoy your rest of the day which is like left. Evening आपकी बहुत कमाल तरीके से enjoy करें, आप अपना favorite काम करके enjoy I करें. was enjoying for past 2 days with my kids. I came Wow, back that's Pune now. great. Sheetal ma'am has to go for her favorite work. That's theater. That's rehearsals. She's going to meet her so many kids. So yeah. Yes, yes. There's a cake waiting for me that's Oh, going to be cut. nice, And nice. तेरी शक्ल देख ली तो मेरा मदर डे बन गया. So, Thank you. yeah, So you have yes, a good and evening too. thank you so much on behalf of Three Unfiltered. Thank you. Thank you for Thank joining. you. Bye bye. Thank you so The much. Bye. Bye. pleasure, Bye. pleasure. Yeah.